ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, हवा बड़ी चल रही है, एंड लास्ट एक हफ्ते 8 दिन में सडनली जुकाम, खांसी, लूज मोशन, वॉमिटिंग सडनली इंक्रीज हुआ। जो मेरे डॉक्टर कोलीग्स यहाँ पे हैं उनको फील हो रहा होगा, उनकी क्लिनिक्स पे सडनली कितना सर्ज हुआ है। जब भी कोई मौसम की बदलाव आता है, एल्डर्स को हम हाईली वल्नरेबल कैटेगरी में डालते हैं। हाईली वल्नरेबल कैटेगरी, इसका मतलब कुछ भी बदलाव आए उनके ऊपर असर जरूर जल्दी होता। सो देयरफॉर टॉपिक बड़ा सिंपल सा है, मौसम बदल रहा। कईयों को तो लगा कि मौसम बदलने से हमें क्या फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। सो द वेयर वेदर चेंजेस, लॉट ऑफ चेंजेस हैपन इनसाइड द एल्डर्स, क्योंकि एल्डर्स वल्नरेबल है। बहुत सारी छोटी छोटी इंफेक्शंस जो आती हैं वो इस साल में ज्यादा आती है। फंगल इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं, जो चमड़ी में दाद कहते हैं, वही दाद गले में भी आता है, फेफड़े में भी आता है, पेट में भी आता है। सो द इन्फेक्शन चेंज। और जो लोग एल्डर्स की देखभाल कर रहे हैं, चाहे वो अपने आप की देखभाल कर रहे हैं या आप किसी की देखभाल कर रहे हैं, इनकी भी जिम्मेदारी बदल जाती है। सो देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट कि जब भी मौसम बदले हम कोई ना कोई एक्शंस ऐसा लेना शुरू करें। अब कहा तो जाता है कि अब नवरात्रे चल रहे हैं, इसके बाद में दिवाली आती है, कुदरत हमें बता रही है कि विंटर आने की तैयारी करिए। तो एल्डर्स को भी तैयारी करनी पड़ती है। एंड आई डोंट थिंक यू हैव ए बेटर गाइड देन प्रोफेसर डॉक्टर विनोय सिंह, जो कि मोस्ट क्वालिफाइड एकेडमिशियन हैं, लेकिन इनकी अपनी रुचि ने इनको प्रेरित किया कि इन्होंने ऐसे स्टडी किया कि इन्होंने नेचुरल मेथड से बहुत सारे लोगों को हेल्प किया है। सो nobody better than Professor Vinoy Singh to talk about the effect of changing weather in the elders. It's a great pleasure, Professor Vinoy Singh, sir, to welcome you once again in नमस्कार। this talk. सत श्री And अकाल। it is nobody better than you to talk about changing weather and the impact on elderly population. Welcome once again, sir. नमस्कार, नमस्कार सर। सत श्री अकाल सबों को। नमस्कार, सत श्री अकाल। और मैं आज थोड़ी इधर उधर थोड़ी बातें हल्की फुल्की करूं, मैं रखूंगा, क्योंकि देखिए अपने गुरु ने 10 पंच प्यारों को लेकर खालसा पंथ शुरू किया, जो आज और उस समय भी क्या क्या अचीव किया और अभी भी हो रहा है। तो हम लोग तो अभी जो है सो हमको लगता है कि 47 अभी हैं हम लोग। तो मैं आप लोगों के सामने एक दो बातें रखना चाहूंगा विषय पर आने से पहले। आप सभी से, एक एक व्यक्ति से मैं ये बातें कह रहा हूं कि देखिए, मैंने अपने जीवन में आई हैव वॉक द टॉक। उसके चलते मैंने बहुत तरह से सफर किया है, नौकरियां छोड़ी हैं, ये किया, लेकिन मैंने कंप्रोमाइज नहीं किया। और मुझे अंदाज है कि ये फार्मा कंपनीज क्या कर रही हैं। शुरू मतलब काफी पहले से था, लेकिन सामान्य जन में दिस वाज नॉट अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। Incidentally, last few weeks has been like very personally disturbing for me, because a lot of facts are coming out, and it is now clear that the big pharma companies were making lovely normal children into autistic children due to following certain known mechanisms, and then they were harvested for the whole life for different medicines and all. And over and above that, they had the solutions, they had the medication to cure it, but that was not disclosed. So I am submitting this to now 50 people in this who are listening to me, that imagine yourself, just think about yourself as a parent, and your child who is normal as a 4 year lovely child, and gets one vaccine, and from 2 days later becomes autistic. And what would those parents be going through? And like this, so many other things are there. A industry which started with cheating
went into stealing, then robbing, then dacoity, and in COVID times we saw murder. So now also the other facts which have come out is that the Merck and the Pfizer and all in their vaccines they have put, and now millions and millions of people are susceptible to early death, which is happening also. It was all deliberate, Hello. and they knew that this contraption is going to kill. It is not going to benefit even one bit. COVID, neither decreasing the incidence, not decreasing the disease severity, but still they pushed through it. All the descent was submerged. Why I am saying all this? Because people like me who have spent their whole life trying to share the alternative knowledge and how you can remain healthy. But I am saying this, see, I have gone beyond the point where I can be disheartened or disappointed, or and I never become frustrated. That is because I do yoga regularly. I am always joyous. But this is also a matter of fact that, let us take this group only. I have had so many sessions, but not a single person has interacted with me in a continuous way to take through this knowledge further. So this is also a strategy by the people who are in the business of keeping all of us unhealthy and selling different things for our lifelong, that creates so much nonsense information using the internet and different medias, that the true information, the lively information, it also gets overwhelmed, and people simply don't know what to do. So we all know that even the very serious people like us who have spent their whole life doing research and try to present the most researched and factual things and ways and means how to uh, get rid of certain aspects, are also these voices also are lost in the din and this cacophony of this nonsensical WhatsApp university and all those things. So this is the background, but even then I go on pursuing, but very few people actually become regular follower of these techniques and technologies. So saying all this, now I am coming to the subject. So forgive me if I have been a bit, yeah, blunt, but I am a surgeon and an IT person. So I believe that I should share what is in my heart. And last, because I follow the Senate hearings very closely, what is going on in US, and what the Secretary of Health, the RF Kennedy Jr. has done, the human service to the mankind, to the all the humans on this planet. Let us see where it goes. Not a single vaccine has been proven to be effective. And now, at the last count, 72 vaccines are pushed into children, making them autistic. One in now 600 children are becoming autistic. So, this is where we are. And on the other hand, we have yoga, we have naturopathy, we have so many techniques. Many of them from very आप म्यूट पे हो गए। अच्छा, तो किसी ने कर दिया मुझे, मैंने नहीं किया। नहीं नहीं, आइए आइए आइए, प्लीज हाँ, कैरी ऑन। या तो अब हम लोग आते हैं टॉपिक पर। जब मैं इस व्यवसाय में प्रोफेसर था, योग यूनिवर्सिटी में, व्हेन आई वाज इन प्रोफेसर देयर, one of my colleagues had gone to take examination in Ladakh for the monks. The monks, they have their own exam for monkhood in the different monasteries. So हाँ, म्यूट हो गए, म्यूट हो गए। म्यूट क्यों हो रहे हैं बार बार? host is muting you, ऐसा मैसेज मेरे को आ रहा है। नहीं, खुशबू तो नहीं कर रही, वो अपने आप हो रहा अच्छा खैर ठीक है, हम तो कुछ टच भी नहीं कर रहे। है। खैर, जो पहला क्राइटेरिया मॉन्कहुड में था, योग, उनके योग के नॉलेज का और उनके योग के प्रैक्टिस का, वो ये परीक्षा थी दैट -20 degree is the temperature that time November, and they had to stand outside in the building in raw nature
for the whole night. And in the morning, they should be completely drenched in sweat. पूरा बाप रे। पसीना से उनको लथपथ उनके अंदर के कपड़े चेक किए जाते थे। अगर पसीने से वो भींगे हुए नहीं हैं तो आगे की परीक्षा वो नहीं देते थे। फर्स्ट स्टेज में वहीं फेल हो जाते थे। आगे और प्रैक्टिस करो आप, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल पावर दैट योग, ये इसलिए मैंने बताया कि इट इज ऑल ए ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एनर्जी। सो ये मैं बताऊंगा कि जाड़े ठंडे के दिनों में, जाड़े के दिनों में आप अपने एनर्जी को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और ये बहुत जरूरी है। दैट इज वन एस्पेक्ट। अनदर एस्पेक्ट इज that when energy is required, so we also know that where it is getting wasted. So in winter, conservation of energy is very important. So I am submitting this for your all of your kind consideration. Please understand that there are only two ways in which energy is consumed. There is not a third way in which it is consumed. There are only two things, there are only two processes which consume energy. When I use the word energy, I mean prana. Prana and energy are 100% synonym. Don't go by the manifestation of energy like electricity or magnetism. I am talking about the core concept of energy, which is defined as prana in the yogic science. One is thinking. So, thinking, every thought consumes prana, energy. You get tired by overthinking, you exhaust yourself, you become weak, and all that. And second is digesting food. I had once told you that how the memory is overwritten and all that. I will not go into the detail again. So, only these two processes consume energy. And when we are entering into the winter months, we need always extra availability of energy due to various reasons, including the immune system, the disease fighting things. So we should not waste energy. That is why, as I told you, that you should have light diet, early diet, no late evening heavy meals, preferably vegetarian. Even if non-vegetarian, you can have soup, etc. Not heavy diet of meat, especially red meat and all. You can once in a while you can have some seafood or you can have some fish, which is consumes less prana in getting digested. Preferably hot vegetarian meals. Second, overthinking. I had shared with you all. It was shared the breath awareness technique, the 001 of our breath as a life force course. So practice breath awareness. Whenever you unnecessary some thinking starts or some thought comes, you have your breath with you. Just become aware of your breath. The mind will become empty. The thought will go away. The unnecessary consumption of energy will be stopped. So these two things is where we are working, where we are working at the reduction in wastage of energy. Now there are other techniques in which we can increase our energy availability for the processes, immune processes and endocrinal processes. Okay. So we have now we have gone into 20 minutes. So up till now, whatever I have said, if there are any questions or any comments, please, a few, I can take one or two, and then I will go to the next aspect where how to increase the availability of energy. There are naturally there will be two ways. One is that reduce the wastage, another is increase the production. So I have covered how to reduce the wastage. In this aspect, if there are any questions or any comments, I would like to take them here. Right, Professor Vinoy, thank you. What I would just add सबकी इंफॉर्मेशन के लिए कि हमने जब चेंजिंग वेदर्स इम्पैक्ट ऑन एल्डरली रखा है, Hmm. तो प्रोफेसर विनॉय इज प्रिपेयरिंग यू, जैसे लोग विंटर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रोफेसर विनॉय आपको प्रिपेयर कर रहे हैं कि आने वाले चेंजिंग वेदर में कैसे आपने ओवरकम करना है। आई विल जस्ट टेक 2 minutes, प्रोफेसर विनॉय, Please, please. दैट So how this चेंजिंग वेदर help के the immune, हाँ, immune system को जो हमको चेंजिंग एनर्जी वेदर देना, में हाँ. जो चेंजिंग वेदर के टाइम चैलेंजेस क्या आते हैं। हम्म. चैलेंजेस ये आते हैं कि ड्यूरिंग द चेंजिंग टाइम, ड्यूरिंग विंटर और ड्यूरिंग चेंजिंग वेदर,
there is increased incidence of viral infections, वायरस इन्फेक्शन का, क्योंकि ह्यूमिडिटी से, हुमस से, जो हवा में मिट्टी घूम रही है वो भी नीचे आती है लेकिन गीली होती है, तो उसके ऊपर वायरस बैठता है, तो वायरस लोड जो है हवा में बढ़ जाता है. प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज द वायरस लोड, नॉट योर दही, नॉट योर बैंगन, नॉट योर आइसक्रीम. हम जो बात कर रहे हैं, चेंजिंग वेदर के साथ इन्फेक्शंस के इंसिडेंट्स बढ़ जाते हैं, वायरल इन्फेक्शंस एंड सम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. जो एल्डर्स होते हैं वो वल्नरेबल होने की वजह से एक सिंपल वायरस इन्फेक्शन जो नॉर्मल लोगों को 3 या 5 दिन में चला जाता है, एल्डर्स के अंदर निमोनिया बदल जाता है. दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज. स्मॉल इन्फेक्शंस कैन टर्न इनटू मेजर इन्फेक्शंस. वायरल इन्फेक्शन के अंदर लूज मोशंस और वॉमिटिंग भी होते हैं, और जितने हमारे एल्डर्स ब्लड प्रेशर की दवाइयां ले रहे हैं, 2 वॉमिट्स आ जाए, एक लूज मोशन आ जाए, उनका सोडियम ड्रॉप हो जाता है. सो लॉट ऑफ एल्डर्स आर कमिंग विद कंप्लेंट्स ऑफ सिवियर एग्जॉशन. डॉक्टर साहब, 2 टटियां आई हैं, एक उल्टी आई है, और शरीर ऐसा थका हुआ है जिस तरह बिल्कुल जान ही नहीं. दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट imbalance. So remember, simple viral infection, simple viral infection which can become bad. Simple viral infection can cause vomiting, diarrhea, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है. और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जैसे ही हिंदुस्तान में लूज मोशन या लैट्रिन लगती है, तो सबसे पहला आइटम क्या शुरू करते हैं? नारियल पानी. नारियल पानी एल्डर्स के लिए इस मौसम में, प्रोफेसर विनोय से मैं मांगूंगा कमेंट्स इस पे, हम नहीं एडवाइस करते. उसका रीजन है कि नारियल पानी जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, तो शरीर का पोटेशियम जो ब्लड में होता है वो बढ़ जाता है, और नारियल पानी इज वेरी हाई इन पोटेशियम. सो ORS इज द बेस्ट आंसर. मैं जल्दी से बता रहा हूं प्रॉब्लम्स. प्रोफेसर विनोय विल टेल यू हाउ टू लुक आफ्टर एंड सेव योर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग दीज कॉम्प्लिकेशंस. सो सिंपल वायरसेस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, सडनली ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से, सडनली ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से एग्जॉशन एंड डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन विदाउट सिवियर लॉस ऑफ फ्लूइड्स, क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट्स का डिहाइड्रेशन. तो एल्डर्स में सडनली बेहोश हो जाते हैं, और देखो उनका सोडियम जो नॉर्मली 135 होता है, 120 मिलता है, क्योंकि बॉडी से पसीना निकलता है. और बहुत सारे एल्डर्स को आदत है कि इस मौसम में भी वो अपने आप को कपड़े ज्यादा पहन के रखते हैं. सो स्वेटिंग, टू मच क्लोथिंग causes severe sweating and causes sodium loss. So I think I will limit myself. Sodium loss is so sudden कि, और प्रेजेंटेशन कैसे होती है, लोगों को तो नहीं पता सोडियम लॉस है, गफलत हो जाती है. एसी ऑन नहीं करते एल्डर्स कि गर्मी तो है नहीं, पंखा चल रहा है, अच्छी हवा है, लेकिन जो पसीने से सोडियम लॉस होता है, इट इज सो सडन दैट दे गेट सोडियम लॉस एंड ब्लड प्रेशर फॉल्स. और जो इंडिकेशन आती है वो आती है कि पेशाब पहले 4-4 घंटे में जा रहे थे, अब हमको 6-8 घंटे में पेशाब आ रहा. सो दीज आर फ्यू सडन चेंजेस दैट हैपन ड्यूरिंग चेंज ऑफ सीजन. इट इज सडन. मैं, इतना सडन होता है कि अभी दोपहर को मैं एक पेशेंट एल्डरली देख के आए हैं. एल्डरली को कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. ही इज 86 years old. 4 दिन से उनको मोशन नहीं आया, तो वो जुलाब ले रहे थे, और लैट्रिन वाली जगह में प्रोफेसर बिनोय इम्पैक्टेड हो गया स्टूल, और इम्पैक्टेड स्टूल जोर लगा के पसीना आ रहा था. मैंने अभी उनको मैन्युअली एक इतना मोटा फीकोलिथ निकाला. क्यों हुआ? क्योंकि 2 वॉमिटिंग हुई 4 दिन पहले, लूज मोशन हुआ, सोडियम उनका 122 आया. सो प्लीज माय एल्डर कोलीग्स रिमेंबर, जैसे ही मौसम चेंज होता है आप वल्नरेबल हो. जरा सा चेंज होता है,
किसी भी जुकाम को जुकाम मत मानिए, इन्फेक्शन है। और अगर आपको एलर्जी भी साथ में है तो ये इन्फेक्शन जो है बहुत जल्दी निमोनिया में बदलता है, ऑक्सीजन ड्रॉप होती है। सो डोंट टेक ए चांस। नंबर टू, नो वॉमिट नो लूज मोशन शुड बी टेकन। कि सफाई हो रही है जी, मेरे अंदर से सफाई हो रही है, वो ऐसी सफाई होती है कि अस्पताल में दाखिल हो जाते हैं। सो देर इज नथिंग कॉल्ड ए साफ गंद। आप ही का आंतरी है, आप ही का स्टूल है, आप ही का पेट है, कहीं गंदा नहीं है। जितने प्योर आप हैं उतना ही प्योर वो है। एंड थर्ड इज heat exhaustion because of excessive sweating. These are the commonest three presentations during changing weather. All three are preventable. तीनों से बच सकते हैं। आज प्रोफेसर बनाए बताएंगे कि इन तीनों से बचने का क्या तरीका है। प्रोफेसर बनाए, वेलकम। नहीं नहीं, थैंक यू डॉक्टर ग्रेवाल। सी, आपने बहुत अच्छी बात कही। और अभी हमने एक दो बहुत ही एग्जैक्ट सेम प्रेजेंटेशन देखा, 121 पर आया। और वो बेचारे बुजुर्ग सुबह में वो बिछावन से उठ ही नहीं पा रहे। तो ये फैक्ट है। और पर्सपिरेशन आदमी उतना सेंस नहीं करता है, और एसी नहीं चलाएगा, और ह्यूमिडिटी में स्लोली लॉस होते जाता है सोडियम। तो ये डॉक्टर साहब ने एक अच्छी बात कही। मैं चूंकि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में कह रहा था, तो इन्होंने दूसरी अच्छी बात की कि इन्होंने कंटेक्ट क्लियर कर दिया कि चूंकि मैं अपने टॉक के सीरीज के रूप में मैं देख रहा था, लेकिन मुझे ये कंटेक्स्ट मुझे भी क्लियर करना चाहिए था कि हम बात कर रहे हैं वायरल इन्फेक्शंस की। whenever the weather changes due to various factors, हमारी इम्यूनिटी कम होती है। और जब हमारी इम्यूनिटी कम होती है तो वायरल इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वायरल इन्फेक्शंस के बारे में हम सब जानते हैं कि देर आर एनी एंटीबायोटिक्स। वी इट इज आवर ओन नेचुरल इम्यूनिटी विच हैज टू डील विथ इट। So we have to support our natural immunity, and in that context, I was telling those things, that how to reduce the wastage of energy, which is directly related to availability of the immune response and everything. So one is that we should reduce excessive thinking. A very convenient way for that is just becoming aware of your breath. The mind becomes calm. And the second is that avoid heavy food, especially in the evening, late evening, because that consumes a lot of energy in digestion. So these are the points which are, and as he said, electrolyte imbalance and all that is very, very pertinent. And we have also seen a lot of cases this during this season. Now, coming to the ways in which we can increase our energy availability to the immune system and to others. So I hope that all of you remember my talks related to breath awareness and breath balancing, breath expansion. That is the ABC of the breath treatments. But here, Brahmali is very relevant. I had told that also, that nitric oxide, and you can now, a lot of literature is coming. I am seeing on the internet, etc. also. Nitric oxide, the wonder molecule, preventing heart attack, clearing arteries, blah, blah, blah. So nitric oxide, you can also, all of you can do a bit of a study. Fortunately, now you have a tool like AI tool like Grok or ChatGPT, etc., where you should definitely subscribe to one of them, so that at least the garbage is not available to you. You can ask Grok. I subscribe to Grok, which is the most, I would say, honest and unbiased. That Elon Musk's that X, which was previously Twitter, that company's AI tool is called Grok. So you ड्रॉप। should ask Grok, hi Grok, tell me, and you can ask anything. So they will tell you the correct aspects. You can ask them how nitric oxide helps me remain healthy, and it will tell you 1, 2, 3, 4, 5. So Brahmri, as you all know, and again you can check with Grok also, that kindly list me the scientific articles which enunciates or like the increase in nitric oxide production by Brahmri pranayam. So it will list you. A lot of work has happened all over the world. So when you are in this transition period, and when in winter, definitely you should do Brahmri regularly. 27 times you should do, at least once a day. But if you are having signs and symptoms of flu, then you can increase it up to 4 to 6 times, 27 cycles of, and doing it 4 to 6 times during the day, followed by steam inhalation, and then somebody thumping your back vigorously
so that your cough and everything which comes out after the steam inhalation, the productive cough will come out. So Brahmri followed by steam inhalation, followed by somebody thumping your back, and you having a positive exhalation. Now, this is the thing which has no side effect. So these are completely safe. So breath awareness, breath expansion, breath balancing, and Brahmri. These techniques are completely safe. There are no side effects. You cannot go wrong. You cannot go in any harmful direction. Okay, all these fingers, etc., putting like this and all that, you swing the fingers is not required. Just I N and you to prolong it. In, as you can see, my lips are slightly apart. My tongue is touching the palate. That is the Brahmri. When I say Ma of the Om, then the lips are softly touching and the tongue is settled at the floor of the mouth. So we have to do Brahmri. Brahmri is more specific to production of nitric oxide. So these are all safe techniques and no risk of any side effects, etc. Now I am telling you one thing which you need some guidance or supervision, but it is a very, you can say, useful practice, especially during winter, etc., when you are like feeling more cold and all. That is called Ujjayi. So Ujjayi pranayam, you in your local community, you should find a teacher who can teach Ujjayi, and you can arrange a small group session where they can teach Ujjayi. So practicing Ujjayi for say 10, 11 cycles of Ujjayi. Kindly note that initially for 3 months you should only practice Ujjayi exhaling Ujjayi. It is like the hissing sound of the snake, or like when the water is running through a pipe, a sound is produced. So that is Ujjayi, where you slightly constrict the base of your throat. Initially, you should only practice it exhalation. So you inhale, because I practice inhalation also. So, but no inhalation Ujjayi. Use the hissing sounds make it. Yeah, you constrict the base of your throat, and the pinching you can think of call it, and then the air is forced through a slightly narrower outlet. So that is Ujjayi. And if we can have people who are very interested, some session we can arrange where Ujjayi is a pointed awareness. Then we have a follow up with Sitli, Sitkari, and Sadant for linear, surface, and 3D awareness. And then the Brahmari is 4D. That means it is the 3D awareness plus the time. So actually, Ujjayi, Sitli, Sitkari, Sadant, and Brahmari, they form a subgroup within the pranayam group of what I had shared with you as the breath has a life force. So, and all these are simple energy optimization tools. You can feel the difference practice after may a week or 2 weeks. You can feel the difference so much that nobody else has to tell you that this is good or bad. But unfortunately, what is happening, there is so much misinformation on the WhatsApp University and in the internet, and people are, and most of the teachers also, they have converted yoga into a circus. So this is very bad and sad, and I have all the sympathy with the general people that they are really confused where to go, whom to talk, and what to follow. All that is definitely there. So it's nobody's fault.
but basic uh, concepts, if we take it forward, it will be very helpful for the changing season and for the coming season of winter. That's all from my side. Any questions, comments? Most welcome. No, I think अभी what is important, Professor Vinoy, कि you have explained that जो प्रिवेंशन का तरीका है, सबसे पहले तो खुद ही शुरू करिए, मेरा स्वास्थ्य मेरे हाथ। तो सबसे पहले प्रिवेंशन का तरीका है कि आप अपने इम्यूनिटी को एकत्रित करिए। लेट अस गेट इट टुगेदर। So, Professor Vinoy, I think what I would suggest or request you just now is आपने last time demonstrate किया था दो exercises. One was the breathing exercise and one was the bhamri. ये दोनों हर एल्डर प्लीज वेदर से मत जुड़िए, रोज ही करिए। सो अगर प्रोफेसर विनोय इफ यू कैन जस्ट डेमोन्स्ट्रेट दैट, देन नहीं उसके बाद वी कैन टेक इट। नहीं, मैं तो वही बताया, ब्राह्मरी में इंग्लिश, दैट इज द इंग्लिश वर्ड INN. If you want to just continue the N, so it becomes in. बहुत सिंपल, वेरी नाइस। So it is the N. So the tongue is, you can check, your lips will be slightly apart, your tongue will be touching the palate. That's right. So this is Brahmari. And this is very, very relevant for the autumn and the winter. And you should do 3-4 times. Best way, no, that you just cannot go wrong, do it before you eat. So while you sit for eating, while you sit for a meal, जी, so you are empty stomach anyway, and you just before starting the meal, you do 5-10 times this Brahmari. That is the best way to do it 4 times a day. why You will not forget also. what advantage before meals? Two big advantage, very, very big advantage is that one is that you should always give a gap after the food is in front of you and you start eating. The process of eating should be delayed by a few minutes after the food is in front of you, and you should have Oh, all the gratitude for the food. Look at it with gratitude. Some things in this creation are merging itself into you for your survival. Their existence is going to be finished. Be it oh, even a vegetable, a grain, or whatever, the memory will be overwritten by your memory, your genetic thing. So they are subsuming themselves into you. So that gratitude that you are offering, that, so that's why Brahma Arpanam, Brahma Havi, Brahma Agno, Brahma Nahutam, Brahmaivatena Gantabyam, Brahma Karma Samadhina. So this is becoming you. So, and because we are doing Brahmari, automatically we are getting that gap of few minutes, 1 or 2 minutes between the food coming in front of us and we start the process of eating. And this gap is also very physiological because as you, the doctor, you know, all the salivary motions and the activities will, the enzymes and the everything will, the process will start. So when you eat and chew properly, the digestion will be better. So the better. scientific explanation is that. So I think again प्रोफेसर विनोय बहुत ही स्ट्रांगली एडवोकेट कर रहे हैं कि इम्यूनिटी के लिए कोई पुश्ते बादाम पीने की जरूरत नहीं है, कोई जाके केरला मसाज कराने की जरूरत नहीं है। सिंपल टेक्निक्स जो आपके घर में है, दैट इज ईटिंग मेथड एंड ब्रीदिंग मेथड विल improve योर इम्यूनिटी एंड हेल्प यू। क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन, एक और मैं सबको शेयर कर दूं, इट इज नॉट कि आज मुझे वायरस हो गया तो बात खत्म होगी, ये री इन्फेक्शन होता रहता है। It is reinfection, and every time there is a second and third infection, the viral load increases. तो पहली दफा अगर आपको तीसरे दिन में खत्म हो गया, तो हो सकता है चौथी इन्फेक्शन जब री इन्फेक्शन होगा, तो you may develop bronchitis. So it is a continuous process of protecting yourself. Changing weather में you have to change your clothes, you have to change your food, you have to change your sleeping time, you have to change your eating habits.
देखिए कितना कुछ कुदरत आपसे मांग रही है, और ये हम नहीं करने पे उसका रिजल्ट होता है कि हमारा शरीर रिएक्ट करता है और हम बीमार करते हैं। सो प्रोफेसर बिनॉय, रिगार्डिंग स्लीप, व्हेन देयर इज चेंजिंग वेदर, इस मौसम में जब दिवाली की अमावस आने वाली है, उसके साथ स्लीपिंग चेंजेस में आप क्या सजेस्ट करते हैं? See, there is a note. I would request Khushbu and your good offices also to re-share them. I can share again today. जी So there are a few very important things before you go to sleep. But in this changing season, a warm bath is very useful. यूज Not only a warm bath, see, not only that, intermittently during the day also, you should soak a thick towel into warm water and then put it on your face. So wipe your face with sweat, sorry, this steam. So in rather than getting a steam and all those things contraption, use just a warm towel and put it on the face. 3 4 times if you do, you can see that a lot of improvement in the congestion and all those things. दे दे So if you are not able to take a warm bath, at least wipe your body or at least your face with a warm towel soaked in warm water before going to sleep. That is one. Other things are there in my note, so the people can go through it again. गो थ्रू, राइट। Other factors are also relevant. देखिए, मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूं, इस मौसम में देर इज इंक्रीज स्वेटिंग, और इंक्रीज स्वेटिंग की वजह से हमारे शरीर के ऊपर पसीना आता है, वो पसीना सूख जाता है। ये पहले भी एक बार एक सेंटेंस बोला था, आज फिर बोलता हूं। आपकी सबसे पहली पुलिस फोर्स जो कि बाहर के अटैक से आपको बचाती है, वो आपकी त्वचा है, स्किन। विद so much of sweating and drying of the sweat on the skin becomes less sensitive to things coming from outside, and therefore body does not react fast. And that is what Professor Vinoy is saying, कि with a hot towel, when you clean, और skin जो face का skin है बहुत sensitive, आपके मुंह पे मक्खी या मच्छर बैठे तो कैसे रिएक्ट करते हैं, उसी तरह अगर हाथ पे बैठे मक्खी या मच्छर तो आप इतना रिएक्ट नहीं करते। चेहरे पे जरा सा हो तो फट अपने मुंह पे थप्पड़ भी मार लेते हैं, बिकॉज द फेस स्किन इज वेरी सेंसिटिव। उसके ऊपर खूब सारी नर्व्स होती हैं, तो वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। इसीलिए चेहरे को गर्म टॉवल से सोप करके उसको क्लेंज करने से स्किन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, एंड योर स्किन बिकम्स प्रोटेक्टिव टू द नेचुरल लेवल दैट इट इज केपेबल ऑफ। उसकी वजह से कम हो जाता है, बीमारी की वजह से कम नहीं है, उस कंजेशन की वजह से उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट दैट आपके जो सेंसर हैं, जो आपके चौकीदार हैं, वो अगर सो रहे हैं तो आपको पता ही नहीं लगेगा कब चोर आया। तो अगर और लोगों आपकी को भी, हाँ जी, कुछ क्वेश्चंस वगैरह या कोई कमेंट हो किन्हीं का। yes, हाँ। anybody else who wants any questions, you're most welcome. I'm reading some comments, let me read them. Yes, डॉक्टर शाही, आप कुछ कह रही थी? It has so many advantages जी beside, the breathing. जी में बिफोर अगर नींद नहीं आ रही है तो आप थोड़ी देर के लिए करो, तो ऑटोमेटिकली यू गो ऑफ टू स्लीप, विच इज वेरी हेल्पफुल। एंड इससे बड़ी कामनेस आती है, यू फील वेरी रिलैक्स। एंड वंस यू आर रिलैक्स, क्योंकि मैंने रिसेंटली आई हैड गॉन थ्रू दिस वायरल इन्फेक्शन, एंड मैंने आपसे बात भी करी थी। आई हैड जी ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम आफ्टर दैट, but I जी। felt this yoga and pranayam really helped a lot in all वेरी नाइस, sorts. थैंक यू। Very थैंक यू डॉक्टर helpful. शाही। देखिए, आप सबके साथ मैं शेयर करूं, एक लाइन बोल रहा हूं, बहुत स्ट्रांगली बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी को नींद नहीं आती, अगर किसी को नींद नहीं आती, उनको नींद की गोली की जरूरत नहीं है। प्रोफेसर प्रणॉय, अगर किसी को नींद नहीं आती,
तो उनको नींद की गोली की जरूरत नहीं है। प्लीज रिमेंबर, मैं स्ट्रांगली बोल रहा हूं। लोग क्या करते हैं, नींद नहीं आती, एल्प्रेक्स की गोली खा ली। मैं नींद के लिए एल्प्रेक्स खाता हूं। यू आर हैविंग पॉइजन। इफ यू कैन नॉट स्लीप, प्लीज फाइंड आउट द रीजन कि आपको नींद क्यों नहीं आती। सिंपल मसल वीकनेस कैन टेक अवे अ पर्सन स्लीप। अभी जिस सज्जन का मैं फिंगर के साथ में स्टूल निकाल के आया हूं, 3 दिन से सोए नहीं थे। मालूम क्यों? क्योंकि लैट्रिन उनकी फंसी हुई थी, लैट्रिन वाली जगह पे वो जोर डाल रही थी और उनको नींद नहीं आ रही थी। ऐसे इंसान को वो नाइट्रेस्ट 5 की जगह 10 मिलीग्राम दे रहे थे। कितना जुल्म कर रहे थे उनके साथ। तो इफ यू कैन नॉट स्लीप, डोंट टेक अ स्लीपिंग टैबलेट। यू नीड टू फाइंड आउट व्हाई। एंड चेंज ऑफ सीजन डिक्रीजेस स्लीप। इट डिक्रीजेस स्लीप। यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ। और या डॉक्टर सर, शाहिन भी कह रहे थे एक जसवीर कि सर का हमिंग क्वेश्चन है। कि हमिंग साउंड बहुत अच्छा सुनाता है। तो प्रोफेसर बिनॉय, पहले आप अपने बेड हाँ, पार्टनर से परमिशन ले लीजिए। ये ना हो कि आप तो सो जाए और उनकी नींद उड़ जाए आपके। नहीं नहीं नहीं, एक है जसवीर सर का, एक आई फील यूरिन ऑन द टिप ऑलमोस्ट थ्रू आउट नाइट बट नो यूरिन, हैज इट जी, समथिंग टू डू विथ चेंजिंग वेदर? नो मैम, सर दिस इज रिलेटेड टू ये उम्र प्रोस्टेट। क्या है आप अपना बताइए जरा। आई फील यूरिन एट द टिप of almost throughout the night, but no urine has 80 years. हाँ हाँ, नहीं नहीं, और ये और कोई सिम्टम बोलिए, प्रकट होइए, कहाँ है? जसवीर जी। Yeah, okay, muted. Yes, there is no other simple, but I take that वो क्या बोलते हैं 0.04 जो यूरिमैक्स 0.4 for और यूरिमैक्स मेरा, 0.4. हाँ, मेरा आप ले लीजिए, आई एम सर्जन, सो आई कैन हेल्प यू, एंड आई कैन रिलेट टू ऑल्सो यू टू योर सिम्टम्स। सो और मुझे आप अलग से मेल कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है ना? Okay. Jasbir ji, Okay. what is important is that for everybody, all people who are taking medicine for prostate, जो prostate की दवाई, आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अ सर्जन विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, जो प्रोस्टेट की दवाई ले रहे हैं वो केवल प्रोस्टेट के अंदर कंजेशन कम करता है। जरूरी नहीं है कि आपके सारे पेशाब के कंप्लेंट्स वो दवाई ठीक कर देगी। यू हैव टू हैव एन असेसमेंट बियॉन्ड मेडिसिन। बियॉन्ड मेडिसिन। और कई दफा, जैसे प्रोफेसर बनाय इज एन एक्सपर्ट एट इट, इट इज जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग कि दवाई के अलावा आपको क्यों नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा। कांस्टेंट सेंसेशन टू पास यूरिन कैन बी a simple spasm in the urethral passage and may not be an obstruction at all. So it has to be assessed. It is important that it has to be assessed. Again, not necessary with the prostate. It can be even in the bladder, even in the kidney. If there is a spasm of the ureter, it can travel towards the urethra. So please, it's not the prostate. आई थिंक डॉक्टर विनॉय ने तभी कहा कि ये इंडिविजुअल असेसमेंट के लिए, बट इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल नॉट अलाउ यू टू स्लीप वेल एंड गिव्स अ कांस्टेंट इरिटेटेड फीलिंग। तो उसको एड्रेस तो करना चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट। सो यू कैन जस्ट सेंड मी अ मैसेज, चटा जी, आई कैन फॉरवर्ड इट टू प्रोफेसर विनॉय फॉर द आंसर। Thank you so much. Thank you so much. And my little question, though it is personal, but have you ever visited a surgeon who has done a per rectal examination for you? No. I was only taking prostate medicine Just a for the minute, last just 10, a minute. 15 years. So you have not had a PR examination done. No. Please go and catch the doctors by your neck and take the name of Professor Vinoy Singh and say कि नो नो डॉक्टर नो। विनोय सिंह ने कहा कि गर्दन पकड़ के पीआर करो। अरे वो ग्रवाल साहब का नाम लीजिएगा। मैं हम दोनों मैं का, नहीं नहीं, because प्रॉपर on a, एक प्रॉपर तो एग्जामिनेशन होना चाहिए, सही बात है, आई एम विद that is on ग्रवाल a सर। lighter note, but all men, please remember, all men, if you do not allow the finger in your anus, you will get the finger in your ditch. A PR examination is mandatory for every male.
No test can replace the finger examination. The moment you feel the prostate, you can find out what is the cause. The moment you feel the prostate, you can find out if there is an inflammation in the urethra. It is so definite. वो डॉक्टर इसलिए नहीं करते कि मरीज कहते नहीं सर ये उसका बगैर ही दवाई दे दो, तो वो एडजस्टमेंट दोनों खुश हैं. नो, नो प्रोस्टेट मेडिसिन शुड बी गिवन विदाउट अ पीआर एग्जामिनेशन. चाहे पीएसए कराया है, चाहे अल्ट्रासाउंड कराया है, जो मर्जी कराया, नो मेडिसिन फॉर द प्रोस्टेट शुड बी गिवन विदाउट अ पीआर एग्जामिनेशन. और अगर कोई डॉक्टर पीआर एग्जामिनेशन के बगैर प्रोस्टेट की दवाई दे रहा है, he is doing more injustice to the patient than any benefit. It is so strong. So remember, you must get a PR examination. Thank you, sir. Thank you so much. Yeah. So any other questions, please, as far as changing weather? And with due respect to Professor Vinoy, I will also advocate at the moment for the elders that you must take a flu vaccine. Flu vaccine has definite signs of protection in the long run. We are advocating, it is being advocated by all of us. The flu vaccine for elder is given every year. Every year there is a new strain that comes. You find out whether the strain has changed this year and you take a virus vaccine. This is the weather during which the flu vaccine should be taken. So it is important. मौसम बदलते रहेंगे, हर साल बदलेंगे, लेकिन ये समझना जरूरी है कि हमने अपनी प्रेपरेशन के लिए क्या क्या करना चाहिए. So look after your hydration. Be careful of dehydration. Do not neglect चार छींक, नाक से पानी, गले में खराश, कान में दर्द, पेट में दर्द, पेट में क्रैम्प्स, दिल कच्चा होना, लूज मोशन होना. ये इतने सिम्टम्स हैं, पर हर एक को सेम नहीं होता. किसी को छींके, किसी को पेट खराब, किसी को लूज मोशन, किसी को गले में खराश. But it is all virus. If you treat the virus, you don't require antibiotic. But the elders are vulnerable, and if somebody is already taking a pump, कोई भी आप में से अगर पंप ले रहा है या खांसी है, क्योंकि आजकल हम स्मोकर नहीं कह रहे, हम बगैर सिगरेट के 10 सिगरेट रोज पी रहे हैं. तो अगर आपको खांसी आती है सुबह उठ के, तो यू आर एट हाई रिस्क. यू मस्ट टेक फ्लू वैक्सीन. Anything else, Professor Vinoy, would you like to add? No, Or thank any you. other? Thank you. I Right. have to also go into a 5 o'clock meeting. So thank you. Achha, right. Namaskar. So Namaskar. anybody else, please, who may ask questions or anything? My Your point is, in all these things, even this mask will help. Oh, Face- sorry, Goel Saab. Sorry. Face Thank you so mask. much for reminding. Thank you so much. Pehla kavach is a mask. I'm so thankful, Goel Saab. Every elder should be wearing a mask. मैं पिछले 10 दिन से रोज अपनी क्लिनिक पे throughout I'm wearing a mask. I don't know how many of you know, but my wife has a very severe chest illness. We both are wearing a mask at home. I'm not entering her room. दूर से ही सत श्री अकाल. Because this time the viral load is a lot. मैं क्लिनिक पे एक्सपोज होता हूँ. I can give the infection to her. So prevention. And a simple virus can become bronchitis and pneumonia within 36 hours. 36 घंटे में. जो एल्डर्स हैं, ये तो सुबह ठीक थे जी, अब तो सडनली डाउन हो गए, थकावट हो रही है. So it is a treatable condition and it is preventable. So please do not neglect, do not delay. आपने सीखे अपनी नानी के टोटके, वो जमाने गए. अब तो आप नाना नानी हो, अब आपके टोटके आगे काम आएंगे. जो पुराने सीखे थे वो उनके साथ चले गए. So it's important, and I like to make, before I invite वो
सावन का महीना जिन्होंने गाना गाया था मारवा जी ने, तो I like to inform all of you that for all the doctors, please register yourself for the ElderCon. For you, your registration is complimentary. And for the elders, we shall be giving a special invitation to join us at 3 p.m. on 26th of October at the Surya Hotel. I will be sending a separate invitation to the elders through the WhatsApp group, and you can come and join us. We are having a panel discussion on community role in elder care. So that will be the topic. So with these words, I thank you very much, and I invite all of you, because फ्लू का ध्यान रखना, वेदर चेंज का ध्यान रखना केवल एक मेथड का है, और वो मेथड क्या है हम सब मिलके बोलेंगे अभी। मेरे साथ सब अनम्यूट करके बोलिए, मेरा मेरा श्वास श्वास मेरे मेरे साथ है, हाथ मेरे